Assalamualaikum everyone, welcome back and today we are going to bind up with the topic called mode और normal वो mode हमने already कर लिया है but today we are going to discuss about continuous and discontinuous data जहाँ पे class intervals given होंगे और हम उसका mode कैसे found out करेंगे. So without wasting time let's get started. जी सो फॉर मोड फॉर ग्रुप डेटा मतलब कंटिन्यूस में चलेंगे जहां पे हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूटी में आएंगे मींस सॉरी see you can see this is class interval 20 to 30 this is 30 to 40 means break नहीं हो रहा है यहाँ देखो class interval 40 to 50 50 to 60 60 to 70 and 70 to 80 means सारे क्लास इंटरवल्स जो हैं कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं. अब मोड के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मोड जो होता है हम उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. बट कंटिन्यूस जब ग्रुप डेटा हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मोड के बारे में बात करें, अगर रॉ डेटा होता तो जो नंबर सबसे ज्यादा मतलब कॉमनली अकर करता है उसको हम कंसीडर करते हैं ना मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर और हम उस चीज को लेकर चलते. आपको बात समझ में और इफ क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होते सम डेटा होता और प्लस फ्रीक्वेंसी होती तो उस केस में व्हाट वी विल डू वी वुड हैव सीन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट वन, उसके अकॉर्डिंगली हमारा वही मोड कहलाता. ओके सो बट दिस इज द केस फॉर योर ग्रुप डेटा एज अ कंटिन्यूस वन. सो कंटिन्यूटी पे समझ में आ गई है और अब हम देखेंगे मोड कैसे फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए वी नीड व्हाट वी नीड अ ग्राफ and we will be drawing a histogram over here so that you will get a better and clear idea. So I'll be doing that. So जी शुरू कर लेते हैं. देखो ये हमारे पास डेटा है और ये हमारा ग्राफ पेपर और मैं एक अच्छा सा स्केल ले लेती हूँ. सो अच्छा सा स्केल मीन्स नथिंग, रूलर ले लेती हूँ और हम इसका ड्रॉ करेंगे एक हिस्टोग्राम के थ्रू. हम अपना क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे विच सेज फाइंड द मोड ऑफ. So let's continue with drawing part. I am using here pen. You must use pencil. It will be much better. But ये थोड़ा highlight होके दिखे और आपको clearly दिखे इसलिए I am using this particular pen. So हम क्या करेंगे, जैसा आपको चाहे vertically चाहे horizontally आप draw कर सकते हैं. मैं vertically draw कर रही हूँ. What I'm going to do, I'm going to take frequency on the vertical side, x-axis और y-axis. चाहो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो. So मैं ऐसे कर लेती हूँ, नो इश्यूज. सो लेट मी बिगिन विद दिस. बिस्मिल्लाह. ओके सो दिस इज देयर. पहले हम दिस इज व्हाट योर वाई एक्सिस. आई होप इट इज क्लियर. एंड व्हाइल डूइंग ग्राफ वर्क ऑलवेज रिमेंबर ये हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रही हूँ तो हिस्टोग्राम भी साथ साथ अगर नहीं आता है तो यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ हिस्टोग्राम. एंड सेकेंडली मैं पेन इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि क्लियरली दिखे और इसकी ब्लॉक्स पे बहुत लाइंस पे बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके आपको लाइन ड्रॉ करनी चाहिए. इधर उधर गया ब्लॉक खराब. ओके ठीक. अब लिसन वन थिंग, मैं दिस साइड आई विल बी टेकिंग व्हाट frequency and this side, okay, and this side I'll be taking what class interval. ओके नाउ व्हाट इज देयर. अब मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. सी सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 to 30 मींस 0 to 30 में गैप है और 0 to समथिंग नहीं जा रहा मींस 0 to 10 तक का 20 तक का गैप है और 20 से हमारा स्टार्ट हो रहा है. सो व्हाट आई विल डू, ये हमारा ओरिजिन मार्क हो गया. दिस वी ऑल नो दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दोनों पॉजिटिव में है. ठीक. अब जैसे हमारा 20 में है तो आई विल डू व्हाट, मैं यहाँ पे ये वेव्स टाइप ड्रॉ कर लूंगी. सो टू शो इन ऑर्डर टू कंटिन्यूटी एंड ऑल. ठीक. ये मेरा आ गया फर्स्ट ब्लॉक मैंने ले लिया एज 20. देन हर ब्लॉक के उस पर मैं ले लूंगी 30 40 50 60 sorry 60 over here. This will be what 70 और कितना जा रहा है हमारा 80 पे जा रहा है. तो आई टेक दिस वन एज 80. आप चाहो तो डबल डबल गैप ले लो जैसे आपकी मर्जी हो बट आई एम टेकिंग ओवर हियर एज इतना गैप लेके चल रही हूँ. और क्लास इंटरवल्स में फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल तो हो गया. अब आई सी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में मेरा मिनिमम क्या है 2 है और ऑड इवन सारे नंबर आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 का गैप लेके चलूंगी. ओके
सो ताकि क्लियरिटी से आई बी एबल टू सी 2, दिस विल बी 4, 6, 8, 10, हाईएस्ट क्या हमारा 11 है, मैं 12 तक ले जाऊंगी या 14 तक ले जाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 12, एंड दिस विल बी व्हाट 14। मैं चाहती तो इसको ज्यादा गैप ले लेती तो इट वुड हैव बीन मच बेटर, और चाहो तो ले लो क्योंकि ये 1 काउंट होता है, 2 काउंट होता, अब इसका हाफ पॉइंट काउंट होगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम करते हैं इसको। अब व्हाट वी नीड टू डू, अब हम अपने क्लास इंटरवल्स देखेंगे और फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंगली अपना हिस्टोग्राम बनाते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है 20 to 30 मींस ये दोनों रेंज जाएंगी, और कितना है 4 लेवल पे। सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, फोर्थ है ये, दिस कम्स ओवर हियर, और ये गया हमारा 30, ठीक, सॉरी ये हल्का सा बाहर निकल गया, ना होना ही चाहिए था, पेंसिल होती तो प्रॉब्लम नहीं होती, सॉरी फॉर दिस। एंड 30 to 40 का रहा है हमारा 7, तो 7 चेक कर लो, 7 यहाँ पे आएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा, तो 7 वुड बी हियर, ओके, ये हमारा आ गया 40 तक, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है 40 to 50 गया है, कितना 9 हमारा आएगा यहाँ, ये छोटा, थोड़ा छोटा लग रहा है ग्राफ, आई थिंक मैं एक बड़ा करके भी इसको दिखा दूंगी आप लोगों को विद पेंसिल, सो ये तो विदाउट पेन कर रही हूँ, सेम चीज ही मैं आपको बड़ा करके दिखा दूंगी, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव 40 to 50, 9 पे जाएगा, तो 9 इज ओवर हियर, फाइन, करो इसको ड्रॉ, इसको कनेक्ट कर दिया एंड दिस, ठीक। सिमिलरली अब हमारा है 50 to 60 is going to 11, same thing I'm going to use, okay, ये आ गया है, और 60 ये वाला आएगा कितना 60 to 70 will go on, what's the frequency is 6, so you can clearly see that it looks something like this, and 70 to 80 as what, it's just 2, okay, so this is your sort of graph you can see, और जहां मैंने क्लास इंटरवल ऐसे लिए हैं, अभी मैं थोड़ा सा और कुछ करके दिखाऊंगी। So what I'll do, I'll have a pencil now so that you can also see more clearly. अब what we will do in this case, जो हमारा सबसे हाईएस्ट जा रहा है as we all know 11, ठीक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 11 की सबसे हाईएस्ट है, क्लास इंटरवल क्या हमारा 50 to 60, सो यू कैन सी दिस। अब इसके थ्रू व्हाट वी विल डू, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल को टच करेगी, ओके, सी लाइक दिस, इसको हमने ऐसे विद द पेंसिल कर लिया है, आई होप इट्स विजिबल, यस इट इज विजिबल, पेंसिल से भी अच्छा लग रहा है, और नेक्स्ट हम उसके जो मींस आसपास के जो बार्स हैं हमारे उसको कनेक्ट करेंगे, ओके, सो यू कैन सी ये भी हो गया है। अब ये जो हमारा मीटिंग पॉइंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर मोड, ओके, ड्रॉ दिस वन एंड लेट मी कनेक्ट टू इट, और पता चल जाएगा कि हमारा मोड कितना आ रहा है, एंड एज यू कैन सी कि ये हमारा टच हुआ है कौन से पॉइंट पे, थर्ड लाइन पे, सो मोड इज व्हाट 53, आई होप इतना क्लियरली समझ में आया है, ये हमारा मोड क्या है, हियर मोड इज व्हाट 53, okay, so I hope this particular point will be considered as what mode, I hope इतनी बात समझ में आ रही है। और मॉडल क्लास पूछ लें कि what's your model class, so it will be the
class interval of in which the mode is lying. So mode किस में lie कर रहा है 50 to 60 वाले में. You can see this. Okay. और ये बिना ड्रॉ करे भी हमें समझ में आ रहा है कि मॉडल क्लास हमारा कितना है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इसकी 11 है. सो वी ऑल नो कि फाइन ये हमारा मॉडल क्लास आ रहा है. बट स्टिल मोड निकालने की ये सब तो करना पड़ेगा ताकि हिस्टोग्राम्स क्लियरली आए. ओके. सो दिस वाज द रूल फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा. जब कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा दिया जाएगा तो व्हाट वी विल डू, हाउ वी विल फाइंड आउट द मोड. मोड में हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा हिस्टोग्राम हम उसको ड्रॉ करेंगे. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू आप फ्रीक्वेंसी किस साइड लो या क्लास इंटरवल किस साइड लो. सो बट इट्स बेटर कि क्लास इंटरवल आप इस साइड लो तो आपको बहुत बेहतर से बन जाएगा. एंड देन जस्ट कीप ऑन यूजिंग द स्पेसिफिक डेटा, जस्ट प्लॉट योर वैल्यूज एंड जो हाईएस्ट है उससे लाइंस ड्रॉ करो. जो मीटिंग पॉइंट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर मोड. ओके. फॉर continuous data in terms of when your class interval is in continuity. Up we will continue with our next part of this only, where class intervals will be not in what, in continuity, means discontinuous होगा. So let's see हम उसके लिए क्या करेंगे. So we have what, mode for discontinuous group data. Up I've already written a question for you all guys so that you can get a very clear idea. So if you will see, I have a class interval called marks. If I have written marks or something, class intervals is given. How you will understand these are the class intervals? See, जब किसी भी range में आपसे बात हो ना, data given in range, that will be considered as in class. Okay. See, 10 to 19 is going, then 20 to 29. See, यहाँ पे this is discontinuous. ठीक है. Why? Because we can see here it is ending with 19, here it is beginning with 20. So gap आ गया 1. Gap ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, it depends. So first of all what we will do, हम इससे पहले continuity में लेकर आएंगे. वो कैसे करेंगे? So let's have a look. इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम फाइंड आउट करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर जब हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूटी में नहीं होते. सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट. एक्चुअली इट्स नथिंग, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और वो I'll explain it to you all here. See, adjustment factor कहता है half lower limit of a class minus upper limit of a previous class. Means आप एक तो हाफ ले लो, ब्रैकेट में कोई भी लोअर लिमिट ले लो, जरूरी नहीं आप फर्स्ट ही लोगे, आप कोई भी लोअर लिमिट ले सकते हो. बस ये बात चेक करना है कि आपका क्लास इंटरवल्स का गैप सेम होना चाहिए. ठीक है. सपोज मैं फर्स्ट की लोअर लिमिट ले लेती हूँ. सो लोअर लिमिट फर्स्ट की नहीं लेती हूँ क्योंकि उससे प्रीवियस क्या है, अपर लिमिट ऑफ अ प्रीवियस क्लास. सो फर्स्ट को छोड़ के हम किसी की भी लोअर लिमिट लेते हैं. तो मैं इस वाले की ले लेती हूँ, सेकंड की. सो सेकंड की लोअर लिमिट इज 20 and what's the, and minus it's written upper limit of a previous class. इससे पहले what is the previous class? It is here 10 minus 19. So here the upper limit is what? It is 19. And if I'll just solve it, this one, so it will give 1 and it will be 0.5. So the adjustment factor is 0.5. Now what I will be doing? While in order to adjust this, so we subtract the adjustment factor from the lower limit and add the adjustment factor to the upper limits. समझ में आ रही बात? तो अब हम इसको ऐसे फॉर्म करेंगे. So have a look. Lower limit में से what we will do? Subtract. So it will 10 में से when you will minus 0.5, it will give 9.5. ठीक? So it will become 9.5 and we said add adjustment factor to the upper limit. So that will be what? 19.5. Similarly, इसमें से माइनस करोगे it will become 19.5 and it will become 19.5. इसमें ऐड कर दोगे. लोअर लिमिट्स में से subtract, upper limit में add. Similarly, lower limit subtraction of adjustment factor and upper limit just add adjustment factor, what it can be, whatever the adjustment factor is coming, just do this thing. Similarly, we will do over here and 59.5. So here our class intervals are in continuous form now and number of students we will copy like that only. Now we will be doing what? We will be using our
this is done. ठीक, now we will be having what are graph part. So ये भी previous वाला question का है, अब हम next करेंगे. ठीक है, so let's continue with that. Okay, so अब I'll be doing कि I can see कि gaps कितने चल रहे हैं. ठीक, so I'll be taking that. ये 60 तक जा गया है अराउंड. तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मार्किंग लेके चलेंगे. कैसे, मैं दिखाती हूँ. ठीक है, this time I'll be using a pencil so that it becomes, always use a pencil for this particular graph work. Okay, otherwise your marks will be deducted. So this time full on pencil. I hope this one is clear and it is visible. Yes, it is clear and visible also. First I'll use this is your origin and this will be your considered as the first point, and I'll mark these lines over here. This one with pen I'll do so that you can clearly see. ये हो गया. अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी मार्किंग. फर्स्ट हमारा क्लास इंटरवल किससे स्टार्ट हो रहा है, 9.5 से, एंड यू ऑल कैन सी दिस. सो हम कर लेते हैं इसको फॉर्म. 9.5 I'm writing here so that you can see. अब here I'll take 19.5. why, the 10 का gap हो गया ना, so I'm taking like that. Okay, this will become 29.5, 39.5, this will be 49.5. so I can also see कि मेरी class intervals इस type की हैं. Always try to use class intervals such way so that you don't get in problem. ठीक है, and this one will be 59.5 and this one I'll take it as 69.5. okay, this is what, this is your x-axis and this is your y-axis. अब what do we have, हमें हमारे पास है 16 is the highest number over here. So I'll be doing what, I'll be taking, first I'll check out okay, whether I'll be getting 16 blocks over here or not. 1 2 3, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. so I can have it. तो मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेती हूँ. ओके, मैं इसको यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ. I'll take my axis over here, so kindly ignore this. okay, I know थोड़ा सा गंदा सा हो गया है बट फिर भी इग्नोर कर देना, ताकि मैं आई वांट कि माय ब्लॉक्स टू लेट, चाहूँ तो मैं 2x2 का भी ले सकती हूँ, लेकिन लास्ट में हमने ऑलरेडी 2 का गैप लिया था, तो अब मैं 1 का गैप लेना चाह रही हूँ ताकि क्लियरिटी से यू कैन सी गाइज. दिस इज 1, दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी 3, दिस इज गोइंग टू बी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and this is going to be 16. okay, this is what, this is our तो अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा गंदा सा लग रहा है, but still you can ignore that. This is what our number of students. Always write whatever is given in your question. If it is written frequency, write that. If it is given number of students or number of labors, whatever, write that. And this is what, continuous class interval. okay, yes, class interval. okay, always remember you have to show this adjustment factor for discontinuous one. okay, so do not think you don't have to show this part, you have to show this part in your question. okay, okay, how you make your this class into, how you converted this continuous class interval into continuous class interval. okay, you're getting my point. We will be like, now let's plot values. so 9.5 to 19.5 goes to what, 6. Where is 6? 6 is here. So I'll do this. I hope it's visible. okay, yes, it is visible. I know it's quite lighter, but I want it to be with the pencil so that you can also see
okay, how the things are going on. Next is 19.5 to 29.5 is 9. Where is 9? 9 is over here. So we will be drawing line over here. This is what we are doing. We are making histogram. Okay, what we are doing, we are making histograms over here and just connect this line. No need to, if you want, you can just do like this. Okay, in order to make it more convenient. Okay, it's totally up to you. Next is our what? 16. 16 is here. So let me put this thing here, marking, and just connect these lines so that we get a clear one. See, and next is what? 13. 13 is here, so you can see clearly. Okay, just connect the lines and make sure you are not like overlying with the blocks. Marking with the blocks is very very important, and you do have to remember. Next, last one is with what? 4. Okay, let's do this one. Okay, let's connect this. It's done. Next is this. Now our this histogram is being made. Now mode time. Mode time is this, the highest frequency, and similarly we will be doing it. We will be connecting this lines, these peak points. Okay, so that we may get a proper this one and this end, these two ends. Okay, so this is connected. Now we will be connecting these two also, and whatever the intersection will be there, this will be considered as what? It will be considered as mode. So now I'm joining this with this one. Okay, it's being connected. You can see, yes, these are connected. Okay, हल्का फुल्का नहीं हुआ क्या? हल्का सा रही है, सॉरी. ओके, हो गया. नाउ आई विल बी चेकिंग कि ये पॉइंट जो हमारा आएगा, that will be considered as what? R. So हम इसको connect कर लेते हैं. Whatever you want, you can do just naming over here. Okay, it's your choice, but I'm not doing over here. I'll be just connecting it. A, B, C, D, E, F, G, H, whatever you want, you can do. And this is the most, make sure your pencil is sharp. I don't want to take any risk. Let me sharp a little bit so that you can get a very crystal clear sort of line. See, while doing graph work or with the geometry sort of work, make sure your pencil is sharp. Okay, or use lead pencil, that are also good. Okay, now you can see. So now I'll be drawing this, and you can clearly see, okay, what is happening. See, it is just before 39.5, 3 blocks before. So I'll be doing what? So 39, see, I'm showing you 39.5 minus 3 blocks. Okay, 3.5 we can say. So it will become what? 38, 36.5. Okay, so mode will be what? 36.5. I just subtracted 3 blocks from that. And mode class, so we already know, model class is what? Is the highest one, that is 29.5 to 39.5. You can all see over here. And so I hope till now this continuity thing is being clear to you.
Thank you for watching. Do like, share, and subscribe. And if you have any sort of problem, do let me know. And if I can help in any way, I'll be there. I'll feel very like happy and satisfied if you will ask me some questions based on this or any other thing. So do let me know and keep on liking. Do share, like, and subscribe. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.